Namaste ji, namaste. Welcome to courtroom. So this will be the first case most likely in your law school when you pick up Family Law 1, and this relates to the Hindu Marriage Act. So I request you before that you watch this lecture/class, please do open your Bear Act and keep it to section 2, subsection 2. तो सूरजमणि स्टेला कुजूर वर्सेस दुर्गा चरण हंसदा. अब पेटिशनर हैं सूरजमणि जी, रिस्पोंडेंट हैं दुर्गा चरण हंसदा जी. Before I get into making you write down the answer, the purposes of which is to clear your semester examination, we'll just get to the basic core funda, the exoskeleton of this case law and the topic at hand. क्योंकि मुझे पता है कि आप इतने बुद्धिमान हैं कि आप आंसर लिख लेंगे, provided that कि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे हो क्या रहा है. और ज़्यादा कुछ भी नहीं, ज़्यादा पेचीदा केस भी नहीं, सिंपल सा है. लेकिन हम ये जो सारी जो डिटेल्स हैं ये मैं आपको अभी लिखवाऊंगा. सो वॉच द लेक्चर टिल द एंड, राइट? बट लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक फंडा कि यहाँ पे हो क्या रहा है. नाउ HMA 1955, it has to be open on your desk right now. HMA is Hindu Marriage Act. बड़ी सिंपल सा फंडा है. अगर आप हिंदू हो तो ये अधिनियम आप पर लागू होंगे. अधिनियम एक्ट. Judiciary aspirants who are in their first year start calling acts as adhiniyams if you are looking at Hindi belt states in the future 3 years down the line. आदत डाल दीजिए, जुबान पे लाना शुरू करिए कि अधिनियम है. ठीक है जी. तो अब आप हिंदू हैं तो तभी ये हिंदू मैरिज एक्ट लगेगी. तो अब इस पे प्रश्न कौन उठता है कि जी अब हिंदू कौन कौन है. अब जी हिंदू कोई ऐसा कोई फिक्स्ड रिलीजन तो है नहीं. तो जो आपकी जो हिंदू मैरिज एक्ट ने नेगेटिवली डिफाइन करा हुआ, नेगेटिव मतलब उन्होंने बता दिया कि अगर आप मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या पारसी हो या जू हो तो आप हिंदू नहीं हो. बाकी आप जो भी हो आप हिंदू हो. लेकिन एक सबसेक्शन 2 में डाल दिया कि अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब हुए अंडर क्लॉज 25 ऑफ आर्टिकल 366, नोटिफाइड शेड्यूल्ड ट्राइब हो, तो आप पे ये एक्ट नहीं लगेगी, प्रोवाइडेड दैट कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फर्दर नोटिफिकेशन ना जारी करी हो गजेट में जिससे वो ये एक्ट आप पे लागू करा दे. Hopefully it is clear up till now. तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 पे अब यहाँ पे पॉज कर सकते हैं लेक्चर एंड जस्ट रीड दिस सेक्शन. विल कंटेन a non-obstante clause in which it still say notwithstanding anything here, there, everywhere. We'll just get to the formal wording of the section in a bit. Says कि भाई शेड्यूल्ड ट्राइब पे ये सेक्शन, ये रादर इस सेक्शन के चक्कर में ये एक्ट लागू नहीं होगी. So this act won't be applicable unless the central government notifies in the gazette that this act is applicable. तो बाय डिफॉल्ट अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब की डेफिनेशन में जो कि आर्टिकल 366 क्लॉज 25 और आर्टिकल 342 में दे रखी है, वहां पे अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब हैं तो आप इस एक्ट से बच जाएंगे. लेकिन आपके ऊपर ये एक्ट लागू कराई जा सकती है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट गजेट में नोटिफाई कर दे. ठीक है जी. और अगर ये एक्ट लागू हो गई आप पे तो सेक्शन 17 में बाइगेमी लिखी हुई है. बाइगेमी में कि जी आप क्या करेंगे, आप अगर आपकी ऑलरेडी एक शादी हो चुकी है तो आप दूसरी नहीं कर सकते. बड़ी सिंपल सी बात है. आप दूसरी शादी till the time that your first spouse is living, and everyone wants their spouse is mostly dead after a period of time, but if they are living, well then आपको बाइगेमी, आप बेसिकली दूसरी शादी हो, जो आपकी जो दूसरी शादी है वो void हो जाएगी as per section 17 of the Hindu Marriage Act, और ये आप पे तब लागू होगी जब आप हिंदू होंगे as per this act. Hopefully अभी तक की कहानी स्लाइटली क्लियर. अगर सेक्शन 17 आपके ऊपर आ गया, if section 17 is applicable to you now, then section 494 of IPC comes into play, which can give you the punishment of extending to 7 years because it makes bigamy as an offense. It classifies it as an offense कि भाई ये जुर्म है, और इसके चक्कर में या तो आपको 7 साल up to 7 साल की सजा दी जा सकती है, उसके साथ साथ फाइन भी लगाया जा सकता है, provided that the second marriage is void by personal law. अब इसका sine qua non क्या है? अभी आप ये लेक्चर पॉज करके एक बारी, मेरी विनती है आपसे कि आप ये सेक्शन नंबर 494 ऑफ द इंडियन पीनल कोड को एक बारी नजर मार लें और फिर वापस आ जाएं इसी लेक्चर. इसमें आपको एक लाइन दिखाई देगी, वो उसका मतलब ये है कि अगर आप सेकंड मैरिज वॉइड अपनी प्रूव करा पाए किसी अपने पर्सनल लॉ से तो आप ये इस सेक्शन 494 को अप्लाई करा सकते हैं सामने वाले पे, जिसके अगेंस्ट भी आप कंप्लेंट लेकर आए. ऑलराइट. बट शर्त ये है
कि जो दूसरी मैरिज है वो अवॉइड होनी चाहिए एज पर योर ओन पर्सनल लॉस। और आईपीसी के अंदर हुएवर लिखा हुआ है तो इट डजंट क्लासिफाई यू एज पर योर रिलीजन, बट सेकंड मैरिज जो है वो आप वॉइड दिखा दीजिए कोर्ट को आकर, तो 494 आईपीसी में पकड़। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जी दो ट्राइबल लोग हैं, दो ट्राइबल लोग हैं और एक से शिकायत आ रही है कि भैया सामने वाले ने दूसरे से शादी कर ली। अब फैक्ट ऑफ द केस, सर्कमस्टांसेस, लॉ वगैरह में मैं अभी वापस जा रहा हूँ, बस ये ऊपर से ब्रॉडली मुद्दा समझ लेंगे। मुद्दा यूजली जब आप एविडेंस एक्ट समझेंगे तो इट्स फैक्ट एंड इशू। अगर आपको फैक्ट एंड इशू वहां पे अपॉलजीज द इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट, खैर एनी विच वे, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आप मुद्दे की बात समझ लेंगे, बेसिकली द फैक्ट एंड इशू इन द एविडेंस एक्ट, मतलब मैं उसकी टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ, आपको सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। जब भी आप केस मैट से कोई पढ़ाई करें, पूरे केस में से पहले मुद्दे की बात समझ लें। जब आप मुद्दे की बात फिल्टर आउट कर लेंगे, मोस्ट लाइकली लाइफ विल बिकम सिंपल। सो एज यू वर सेइंग कि जी ये दोनों ट्राइबल में सामने वाले की शादी हो गई। अब एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 2 के तहत ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, ये हिंदू मैरिज एक्ट इनकी ऊपर नहीं अप्लाई हो रही बिकॉज दे फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एज गिवन इन आर्टिकल 363, 342 एंड 366 में क्लॉज 25। तो यहाँ पे जो पिटिशनर है वो कहती है जी आई एम अ हिंदू बाय रिलीजन, मेरी मैरिज हिंदू राइट से हुई है, मैं आपको बता रही हूँ कि वैसे मैं शेड्यूल ट्राइब हूँ बट जनरली अदरवाइज वी प्रोफेस हिंदुइज्म, तो शादी वगैरह भी मेरी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हुई है। और सिंस द हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाइज टू अस, ये आर्ग्यूमेंट, द हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाइज टू अस, तो देयरफॉर सेक्शन 17 बाइगैमी इज एक्टिवेटेड। देयरफॉर इनको सामने वाले हमारे क्या बोलते हैं जो पति देव हैं, इनको पकड़िए आप जाकर, क्योंकि इन्होंने तो दूसरी शादी कर ली जब तक इन्होंने मेरे से डिवोर्स भी नहीं लिया। क्योंकि सेक्शन 17 हो गया तो सेक्शन 494 की रिक्वायरमेंट मैंने सेटिस्फाई आपको करा दी है, तो अब आप इनको पकड़े जाकर। ठीक है जी, अब पकड़ने की बात आती है तो कोर्ट कहता है देखो जी ऐसा है कि नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट इज स्पेसिफिकली टेलिंग यू कि शेड्यूल ट्राइब पे ये तो एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है। अब इसमें ये तो आप आर्ग्यू कर रहे हैं कि जी है क्योंकि मैं हिंदू हूँ, क्योंकि मेरी शादी हिंदुइज्म वगैरह के हमने रिचुअल फॉलो करे हैं और जनरली भी हम अपने आप को हिंदू ही आइडेंटिफाई करते हैं। तो फिर कोर्ट के पास मुद्दा ही आ गया कि ऑब्वियसली हिंदू कौन है, तो उन्होंने उस पर टिप्पणी दे दी, दैट इज व्हाई दिस इज देयर इन योर केस मैट। फिर वो कहती है कि अच्छा चलो फिर एक काम करो, चलो हिंदू मैरिज एक्ट तो नहीं अप्लाई होगी, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ एक प्रथा है, रीति कस्टम, कि चलो भाई साहब हिंदू मैरिज एक्ट तो हमारे पे नहीं अप्लाई हो रही, जो हमारी जो प्रथा है, जो हमारा कस्टम है, वो कह रहा है कि हमारे यहाँ सिर्फ मोनोगेमी अलाउड है। तो सिंस आपने कस्टम को इतना महत्व दे रखा है, आर्टिकल 13 में भी बोल रखा है, यहाँ पर भी आपने बोल रखा, सब कुछ आपने बेसिकली कर रखा है, तो यहाँ पर आप मोनोगेमी ही अलाउ हो सकती है, हमारे तो ट्राइबल में है, हमारे जत्थे में बेसिकली। तो आप क्या करेंगे जी, आप 494 फिर एक्टिवेट कर दें और क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं जी, आप इन पर लगाएं और इनको जेल भेज दीजिए, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट नहीं हो रही। तो अब दूसरा रूट लिया गया, रूट क्या लिया गया कि हमारे यहाँ तो कस्टम है भाई साहब, हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई हो ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने कस्टम वायलेट किया है, कस्टम इज इक्वल टू लॉ, तो देयरफॉर 494 में इनको पकड़ो बिकॉज सेकंड मैरिज इज वॉइड एज पर द कस्टम। आप हिंदू मैरिज एक्ट के तहत नहीं अप्लाई करा पा रहे, क्योंकि उसमें अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट की तरफ नहीं अप्लाई करा रहे तो सेक्शन 17 एप्लीकेबल नहीं होगा, बाइगामी वाला तो 494 नहीं आएगा। वो कह रही कोई बात नहीं, हम एक्ट को रखते हैं साइड में, मेरे यहाँ कस्टम है। ग्रेट, अभी तक होपफुली कहानी इज क्लियर। तो कोर्ट ने कहा ये आपने पहले तो नहीं कहा था मैडम, ये तो अब आप गेम खेल रही हैं आप हमारे साथ, क्योंकि कोर्ट उतना भी देखिए थोड़ा बहुत बेवकूफ होगा शायद, लेकिन पूरा तो नहीं है। प्लस आप ये कस्टम को प्रूव कर दो, साबित कर दो, हम बैठे हम सुनने को राजी हैं, आप कस्टम को प्रूव कर दो, आप साबित कर दो, तो आप वो भी ना कर सकी, देयरफॉर आप अपने घर जाएं। और पूरी जजमेंट में जो आपके केस मैट में वो पैराग्राफ मिसिंग है, पूरी जगह उन्होंने कहा जी आपको अगर राइट मेंटेनेंस वगैरह इनसे लेनी हो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप प्रॉपर अलग सिविल सूट डालिए, बट इसका मामला, इस केस में जो आपने जो मुद्दे उठाए थे उनका जवाब ये रहा। अब हम जा रहे हैं ऑब्वियसली आंसर लिखने। अब आंसर के अंदर जो अभी तक हमने भाषा यूज करी थी वो तो ऑब्वियसली हम नहीं लिखेंगे,
So if you're explaining this case law in your semester, firstly the case law name, no need for the citation के बिना काम चलता है. Surajmani Stella Kujur versus Durga Charan Hansdah. So the main point in contention is that who is a Hindu for the purposes of the applicability of Hindu Marriage Act 1955. Since the petitioner is arguing that they are a Hindu, so please make the act applicable to them. So the court straight away went to section 2. This is subsection 1 and we go straight to subsection 2. But before going there, we are going to look at the negative definition. So whenever you're writing an answer, so if it is an OBE examination that you're taking, you can definitely quote quite a lot in this section. If you are taking a regular semester offline exam, which hopefully soon will happen, you can सिर्फ और सिर्फ आप ओवरऑल ब्रॉडली एग्जामिनर को बताइए आएगा कि बुद्धिस्ट, जैन, सिख आपको पता है हिंदुइज्म के अंदर काउंट किए जाते हैं. Alright. And then whoever is not a Muslim, Christian, Parsi or Jew by religion is a Hindu. But subsection 2 is saying, notwithstanding anything contained in subsection 1, which is a non-obstante clause, nothing contained in this act shall apply to the members of any scheduled tribe within the meaning of clause 25 of Article 366. Now, clause 25 of Article 366 mentioned करिएगा अपने answer. So these are points that you cannot skip while writing an answer. So this happened of the Constitution unless the central government by notification in the official gazette otherwise directs. Hopefully you have Bare Act, Open Act, subsection 2. Please get into the habit of studying only from the Bare Act first and foremost. That should be your primary source of anything in law. There is nothing over and above and beyond. Everything else is a commentary on the Bare Act. So all the textbooks that you have, they are commentaries on the Bare Act. Alright. So Article 366 clause 25 mentioned करना है unless the central government by notification of the official gazette otherwise directs कि scheduled tribe पे by default कोई act applicable नहीं है. Otherwise central government directs. Okay. So parties are tribal. The appellant is an Orion. The respondent belongs to the Santhal committee. Santhal committee से संथल याद है, संतनम नहीं, संथल tribe, sorry. So absence of notification under Article 342, you will be deemed to be scheduled tribes under as basically as Hindu. अगर कोई notification नहीं आती 342 के तहत, even if a notification ever to be issued, act can still be applied. अगर further notification आ जाती, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, just random points to write. If you wish to write them, great. If you don't wish to write them, no problem at all. But do explain to the examiner that you have understood what is the purpose of this case law that you're studying. So it is not disputed that as per the scheduled tribe order, now no need to rectify all those जो आपके जो order number दे रखे हैं, ज़्यादा कोई रटने की ज़रूरत नहीं. You can just write this language. And as per the scheduled tribe order in 1950, both the tribes, they were mentioned in part 12 of those orders. So they are classic scheduled tribes. They belong to scheduled tribes as per the definition contained in Article 366, Clause 25. I keep on repeating this so that it gets drilled into your head. So therefore, they are protected from this Act's operation under Section 2, Subsection 2 of the Hindu Marriage Act. Great, अभी तक समझ में आ गया. Because they are scheduled tribes under the meaning of the term contained in the Constitution, this Act does not apply to them as per Section 2 and Subsection 2. Okay. Now, appellant says कि ठीक है भाई, आप मेरे ऊपर Act ना apply कराएं, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ. So there is a custom in our tribe which mandates monogamy and submits that the respondent's second marriage was held while the first one was subsisting. Great. So therefore 494 IPC के अंदर, the 494 IPC is applicable on the respondent, and please go ahead with the criminal prosecution. So 494 of the IPC, now you have to mention 494 of the IPC. You have to mention section 17 rather of the Hindu Marriage Act. So marrying again during lifetime of husband or wife. Whoever is not discriminating based on, there's no discrimination on religion, having a husband or wife living, marries in any case in which marriage is void by reason of its taking place during the life of such husband or wife. Now this thing, which by reason of its taking place, reason कहाँ दे रखा होगा in your relevant personal laws. To avoid this mess, we always keep on advocating for a uniform civil code as per Article 44, which is given in Part 4, that is a DPSP. Right? I keep on revising myself, such as in this manner. So while such marriage is void by reason of its taking place, so as per your personal law, if the second marriage is void
thanks to your first husband or wife being alive and you haven't taken a divorce from them, we go to 494 and 495. Now, no need to enter into the depths of this section because that is not required. वो आप IPC में जाके करेंगे, right? तो 494 IPC अपने आंसर में जरूर मेंशन करिएगा, और OB लिख रहे हैं तो प्लीज टाइटल जरूर मेंशन करिएगा, मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ, राइट? नाउ शी सेज कि क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट तो क्लियर हो गई कि भाई आप पे तो एप्लीकेबल नहीं है, चाहे आप जितना मर्जी आर्गुमेंट कर लो. द ट्रायल कोर्ट सेड द सेम, द हाई कोर्ट सेड द सेम, द सुप्रीम कोर्ट सेड द सेम. सुप्रीम कोर्ट के एंड में जब अपैलेट स्टेज पे हम यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने SLP लगाई थी हाई कोर्ट से. So this is a remark in the judgment that no custom can create an offence as it essentially deals with civil rights of the parties, and no person can be convicted of any offence and no person can be convicted of any offence of repeating except for the violation of law at the time of offence. And Article 13 Clause 3 वो जो order का जो शब्द है it classifies it as law. Alright. So basically it is saying कि custom cannot create an offence as it essentially deals with the civil rights of the parties. Because if customs start to create offences, then our legal system is going to take a massive, massive hit. Now, customs are an important source of law, as you are going to be studying in the jurisprudence lectures, basic jurisprudence classes. So, if you explore the LLB X playlist, you will find that pretty much most of your first semester is covered on this very channel without any charge whatsoever. Because the original purpose of teaching laws of India was to cover out the semester wali studies, but since, well, you know, these videos obviously don't do well, so therefore the revenue is like mahine ke 7 paise 7 rupees or something like this. So therefore we eventually entered into the coaching space, right? Because everyone has a kitchen to run. Now, definition, this act unless the context otherwise requires the expression. अब वो कहता है जी चलो थोड़ा custom को ढूंढ लेते हैं. So do mention the definition of custom in your answer when you're writing this very specific case. The expression custom and use signify any rule which, having been continuously and uniformly observed for a long time, has obtained the force of law among Hindus in any local area, tribe, community, group or family, alright? And the custom has to be certain, it is not unreasonable or opposed to public policy, right? And that basically ये 3 factor आप लिखिएगा कि जी आपका जी custom and usage signify any rule which, having been continuously and uniformly observed, key point number 1, for a long time, key point number 2, has obtained the force of law among Hindus. So for custom to have the color of law, it is necessary for the party claiming it to first plead that such a custom exists and thereafter prove that it is ancient, it is certain, and it's reasonable, it is clear and unambiguous evidence आप provide करेंगे that that custom exists, जो कि यहाँ पर वो नहीं कर पाएंगे जिन्होंने केस लगाया है, right? तो यहाँ पे a marriage solemnized between Hindus before the commencement of this act, which is otherwise valid, shall not be deemed to be invalid under Section 29, or ever to have been invalid by reason only of the fact that the parties thereto belong to the same gotra or parivar. क्या पूरा नहीं करना. Section 29 is just a demonstration of the legislature's recognition of the customs importance. वो कह रहा है कि 1955 से पहले आपकी अपनी प्रथा अपनी रीति की वजह से अगर जो भी शादी वगैरह हो रखी है, जब ये एक्ट आ गई, this act obviously can go contrary to whatever has happened in the past. They're saying those marriages will not be held to be invalid. Fun fact, इस एक्ट से पहले हिंदूज के अंदर more than one spouse was allowed, more than one wife, क्योंकि अगर आप पुराने जमानों में जाएं तो हर राजा की 4 बीवियां होती थी. आज की डेट में आ जाएं तो अब सोसाइटी ने ऑफिशियली बैन कर दिया, लेकिन अगर मोस्टली आदमी जो बहुत ज़्यादा पावर और बहुत ज़्यादा पैसे में, मोस्टली दे यूजुअली हैव मल्टीपल रिलेशनशिप्स. इट्स जस्ट द नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी जनरली स्पीकिंग. So the Section 29 recognizes the importance of custom and it is important for the legislature as well. Okay. So complaint, अब ये वाले facts आपने अपने केस के लिखने. Complaint was basically made at the Chief Metropolitan Magistrate at New Delhi that marriage was done as per according to Hindu rights and customs. The case is that the accused didn't take a divorce and went in for a second marriage. Therefore, 494 IPC's criminal liability under 494 IPC is attracted. Now, nowhere in the complaint,
Now the problem that started nowhere in the complaint that the appellant has referred to any alleged custom. तो पहले जो initial जो prima facie complaint थी उसमें ऐसा कुछ mention नहीं था, right? And 494 की IPC का sine qua non of term that I very frequently use, sine qua non, that is the essential element without which this section cannot come into operation or cannot be retracted or cannot come into play, any language that you want to use. The second marriage is well, it's void. The second marriage is void. ये आप दिखाएंगे to attract 494 IPC. Right. So trial court said the absence of evidence of, well, you are not, आप prove नहीं कर पाएंगे कि कोई custom है, and you didn't even claim it initially. High court said the same thing. Section 17 क्या कह रहा है? Punishment of bigamy. Any marriage between two Hindus solemnized after the commencement of this act is void if at the date of such marriage either party, so it belongs to both, had a husband or wife living. Alright. तो यहाँ पे अब ये बहुत ज़्यादा आपकी जो दूसरी जो शादी है वो कह रहे हैं void करा दो, तो void करा देंगे तो फिर आप 494, 495 IPC में चले जाएंगे. लेकिन अगर ये एक्ट आप पे एप्लीकेबल ही नहीं हुई, फिर आपको कस्टम का रास्ता लेना पड़ेगा, तो कस्टम आपको प्रूव कराना पड़ेगा. इस केस में पैरेंट को प्रूव नहीं करा. और सबसे ज़्यादा जो क्रूशल जो फैक्ट है, it is not disputed before us that in the Constitution Schedule Tribe Orders 950 as amended, ये पूरा आपको नहीं रखना है, 63 और 950, it is humanly impossible. तो OB में तो आप डायरेक्टली लिख भी देंगे आई बिलीव, क्योंकि आपके सामने किताब पढ़ी, बट जब आप वैसे सेमेस्टर ऑफलाइन जाएंगे तो ये सब मतलब दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. योर अंडरस्टैंडिंग इज यू विल हैव टू डेमोन्स्ट्रेट दैट यू अंडरस्टूड द सब्जेक्ट. बोथ द ट्राइब्स टू द पार्टीज बिलोंग एज स्पेसिफाइड इन पार्ट 12. It is conceded even by the appellant that the parties to the petition are two tribals who otherwise profess Hinduism, but their marriage being out of the purview of Hindu Marriage Act 955 in light of Section 2, subsection 2 of the Act are thus governed only by their santal customs and usages. वो खुद ही कह रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं चलो थोड़ा देख लो अगर हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई हो सकती है, कह रहे नहीं. तो बेसिकली फिर कोर्ट ने कहा जी राम राम. सो दिस इज बेसिक प्रीटी मच. अगर मैं आपको सम अप करूं तो आप थोड़ी सी कहानी बताएंगे, तो आपके पास जो केस आएगा या जो प्रश्न आएगा बेसिकली उसमें वो एक फिक्शनल सी ऐसी सेम कहानी ऑलमोस्ट बना के दे देंगे, नाम वाम बदल देंगे, और आपको ये आंसर जो आप अपना लिखेंगे, यू विल हैव टू यूज दिस केस and explain to the examiner with a brief set of facts. You will have to mention section 2 subsection 2 पे ही टिका हुआ है ये केस. Who is a Hindu as per section 2? What is the custom usage as per section 3? Section 17 bigamy, 494 IPC, and you are going to tell the examiner that you know that the Hindu Marriage Act is not applicable to scheduled tribes. And what is the value of a custom? कि कस्टम पहली बात है क्या, एंड देन इस केस में कैसे कस्टम के लिए एक बैकअप ऑल्टरनेटिव रूट वकील साहब ने यूज करा होगा. चलो कस्टम के थ्रू आर्ग्यू कर लेते हैं, बट द कोर्ट डिड नॉट एक्सेप्ट दिस कंटेंशन, एंड दैट्स प्रीटी मच दैट इज ऑल देयर इज टू दिस केस लॉ, राइट. होपफुली दिस हैज बीन क्लियर. एक्सप्लोर द LLB X playlist. You will find a lot many lectures that will aid you significantly in your law school journey. एंड जब आप ये पढ़ाई करें तो अपने नोट्स सारे सिक्योर करके रख लीजिएगा. अगर आपने कभी आगे जुडिशरी वगैरह की तैयारी करनी हो और उस तरफ जब आप रास्ते पे आप उस रस्तों पे जाएं, all of this will come back into play. Obviously, you know, semester निकालना is a very different ballgame to judiciary preparation, but this sort of understanding certainly aids your preparation there. All right, wishing you all the very best. Take care, bye.